बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 दिसंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर जो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से दरख्वास्त थी, उसके हवाले से बड़ा तगड़ा फैसला जारी किया गया है अदालत का। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है उसमें इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ एक चार्ज शीट है। और मैं समझता हूँ कि इस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सबसे बड़ी रेमेडी वो तौहीन अदालत है इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसरान के ख़िलाफ़ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर हो सकती है। लेकिन उससे बढ़ के जो एक वाक़या हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वकला ने जब तोशा खाना नअहली, जो इमरान खान की दरख्वास्त थी तोशा खाना नअहली के ख़िलाफ़ और इंतखाबात लड़ने की इजाज़त के लिए जो दरख्वास्त थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो जब दायर होने गए तो वहाँ पर ऐसा क्या हंगामा हुआ कि कायम मुकाम चीफ जस्टिस को बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दायर कर दी गई है कि जो मुंशी है सीनियर वकील लतीफ़ खोसा का, उसको अगवा करने की कोशिश की गई और इमरान खान की जो पिटिशन्स थी वो उससे छीनी गई। और इस बुनियाद पर आज खुद नोटिस का कि आपके ही प्रीमिसेस में, आपके अहाता में, आपके पास इंसाफ लेने के लिए आने वालों के साथ जो हशर किया जा रहा है, पहले तो नॉमिनेशन पेपर्स छीनने की बात थी और उसके हवाले से बातें सामने आ रही थी, अब तो दरख्वास्तें भी, पिटिशन्स जो इमरान खान की हैं उनको भी छीनने की कोशिश की गई। उस पर बाकायदा तौर पर 2 सफ़ात की दरख्वास्त और उसमें बड़े तगड़े एलिगेशंस के साथ कार्रवाई का जो मुतालबा किया गया है बहुत अहम है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त थी गौहर अली ख़ान वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। ये 2 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला है। ये तहरीर किया है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने। और मंसूर अली शाह साहब ने कहा है जी कि इसमें शुएब शाहीन थे, नियाज़ुल्लाह खान न्याजी थे और जबकि मंसूर उस्मान अवान वो पेश हुए रियासत की तरफ से। उन्होंने कहा कि थ्रू दिस पिटिशन अंडर आर्टिकल 184(3) of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, Ghaffar Ali Khan, the chairman of Pakistan Tehreek Insaf, has approached the court praying that the Election Commission of Pakistan has to ensure free and fair elections in the country by providing a level playing field for the leaders and workers of PTI. It is alleged that members of PTI, upon filing their nomination papers under the announced election program, are being arrested, harassed, and their nomination papers are being snatched from them, which is blatant use of abuse of fair and free electoral process. Learned Counsel for the petitioner submits that in this regard they have approached the Election Commission of Pakistan under the Election Act 2017 by filing complaints. However, there has been no response on behalf of the Election Commission. ये मंसूर अली शाह साहब ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था वो लिखा। आगे अदालत ने कहा, ऑन कोर्ट्स कॉल द लर्नर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान एंड द रिस्पोंडेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन आर प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट। द सेड रिप्रेजेंटेटिव्स at the very outset submit that certain complaints have been received by the election commission this morning, which will be immediately attended to. Both the attorney general for Pakistan and the representatives of the election commission has assured the court that elections will be held freely and fairly as mandated under the constitution. They further assured that the grievance of the members of Pakistan Tehreek Insaf or any other political party received by the election commission will be decided and resolved on urgent basis, and it is accordance with law where any action is required to be taken. Such an action will be taken so that every political party in the country enjoys level playing field and that the elections are conducted freely and fairly. अब ये इलेक्शन कमीशन के वकील का और अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ बयान किया। आगे अब फैसला, जो फैसले का पैराग्राफ है वो, The Election Commission plays a crucial role in the democratic process, especially in conducting elections. Under Article 2183 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, Election Commission enjoys the constitutional responsibility to conduct elections honestly, justly, fairly, in accordance with law and to guard against corrupt practices. While under Article 220 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, in the country shall the executive authorities in the country shall assist the election commission in the discharge of functions. Election commission is to ensure that elections are conducted in accordance with the democratic principles and that elections are free from undue influence, coercion and corruption. इलेक्शन कमीशन, अब ये ऑर्डर्स जारी किए जा रहे हैं कि आर्टिकल 218 के तहत और आर्टिकल 220 के तहत ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए और किसी तरह का कोई इन्फ्लुएंस ना हो।
Election Commission is also to ensure that all political parties and candidates have an equal opportunity to participate in the election process. ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि तमाम जो कैंडिडेट्स हैं, तमाम सियासी जमातों के, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। जी आगे the importance of free and fair elections and maintaining a level playing field during elections cannot be overstated. Free and fair elections provide legitimacy to the elected government and maintain the trust of the public in the democratic process. कि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है वो बेहद ज़रूरी हैं और आवाम पर एतमाद के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके ही रिप्रेजेंटेटिव आएँ और वो साफ शफाफ इलेक्शन के ज़रिए आएँ। अ लेवल प्लेइंग फील्ड इज़ essential for the healthy competition, ensuring that elections are a true reflection of the people's choice rather than the result of manipulation or coercion. It is important to remember that organizing free and fair election is more important than the result itself. उन्होंने कहा नताइज से ज़्यादा फ्री एंड फेयर इंतखाबात करवाना ये बहुत अहम है और ये एक लाजमी चीज़ है। The petitioner or for that matter any person representing any other political party in the electoral process may approach the election commission for the redressal of their grievances relating to the election. Election commission shall attend to these grievances on urgent basis and resolve them expeditiously in order to ensure that the electoral process remains smooth, open, transparent, free and fair. Let this exercise be completed by Election Commission promptly without determining the timelines given in the election program, because voters must have faith in electoral process for our democracy to succeed. कि जी ज़रूरी ये है कि इंतखाबात साफ शफाफ हों और ताकि हमारे लोगों का एतमाद इस प्रोसेस पर आए। जब तक आवाम का एतमाद नहीं होगा इस प्रोसेस का कोई फ़ायदा नहीं है। दिस पिटिशन इज़ डिस्पोज ऑफ इन अबव टर्म्स कि जी इन कंडीशंस की बुनियाद पर और इन अहकामात की बुनियाद पर ये डिस्पोज ऑफ की जाती है। अब ये 2 सफ़हात पर मुश्तमिल मंसूर अली शाह साहब ने ये लिखा है और उसमें बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन को हदायत जारी की गई हैं। अब इलेक्शन कमीशन अगर हदायत पर अमल दरामद नहीं कर रहा तो इलेक्शन कमीशन इस पूरे प्रोसेस की तौहीन कर रहा है। जब वो तौहीन कर रहा है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां आज लाहौर हाई कोर्ट खुली है, बाकी अदालतें आज इंसाफ दे रही हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तौहीन अदालत की दरखास्तें भी तैयार कर ली हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है। अब लेवल प्लेइंग फील्ड का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आने के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादती होगी उसकी डायरेक्ट तौहीन अदालत दायर होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब इमरान खान जो जिनकी तोशा खाना नहली का जो फैसला सस्पेंड करने की दरख्वास्त आमिर फ़ारूक साहब ने खारिज की थी उसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो क्लर्क हैं लतीफ़ खान खोसा के, उनको वहाँ अगवा करने की कोशिश की। अगवा तो ना कर सके लेकिन जो दस्तावेज़ात थी और पिटिशन्स थी वो उन्होंने वहाँ से उनसे छीन ली। अब उन दस्तावेज़ात चूँकि वो अटेस्टेड कॉपीज़ थी वो छीनने के बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिटिशन की एक और जो कॉपी लेके जब फ़ाइल की तो उन दस्तावेज़ात के ना होने का एतराज़ लगा, जिसके ऊपर वो एतराज़ से के साथ वापस होगी जो अब कल दोबारा फ़ाइल होगी। चूँकि दस्तावेज़ात दोबारा मुसद्दक़ा कॉपीज़ लेनी थी वो दस्तावेज़ात तो चुरा ली गई। क्यों चुराई गई? ताकि वक्त गुजर जाए, नॉमिनेशन पेपर्स का वक्त गुजर जाए। उस पर यह दरख्वास्त है और ये एक चार्जशीट है कि सुप्रीम कोर्ट के अहाते में ये कुछ हो रहा है। The Honorable Chief Justice of Pakistan unauthorized interference and intimidation of clerk counsel at the Supreme Court premises. I am writing this application with great concern regarding a distressing incident that occurred at the premises of Supreme Court. I wish to bring to the estimate court attention the unlawful and alarming episode experienced by my clerk on 23/12/2023 at between 9:40 से 10 बजे सुबह during the course of his official duties within the premises of esteemed court. This occurrence took place at the steno room and reception located at first floor right in front of Supreme Court bar office. उन्होंने कहा जी कि मेरे जो कौंसल थे वो उस वक्त फर्स्ट फ्लोर पे थे जो सुप्रीम कोर्ट बार ऑफिस के सामने है, वहाँ पर थे जब ये वाक़या पेश आया 9:40 से 10 बजे के दरमियान। On the aforementioned date, my appointed clerk Muhammad Usman
registered in Supreme Court Bar Association was present at the Supreme Court building to file a petition कि मेरा जो क्लर्क जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में बतौर क्लर्क रजिस्टर है वो पिटिशन दायर करने आया। शॉकिंगली ही वाज abruptly intercepted by 4 unidentified individuals dressed in civilian attire whom he can recognize upon identification के 4 लोग थे जिन्होंने वो सादा कपड़ों में मलबूस थे जिनको सामने आने पर पहचान लिया जाएगा। वो उन्होंने उनके ऊपर धावा बोला। These unknown persons unlawfully distressingly the files and documents related to the petition of Imran Ahmad Khan Niazi against order of Islamabad High Court for suspension of order passed by trial court which was to intended for submission before this honorable court. Furthermore, these individuals implied threatening language and actions instilling a sense of fear and intimidation in my clerk. Their unwarranted action and menacing behavior were a blatant violation of legal and fundamental rights as well as and disregarded for the sanctity of the esteemed institution। अब वो कहना क्या चाहते हैं, implied these individual implied कि ये जो इनफरादी मुलाजिम थे इन्होंने ये हमला किया। इन्होंने हमला करके ना सिर्फ हमारे बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की है बल्कि इन्होंने अदालत की तौहीन की है कि अदालत के हाथे में उन्होंने हमला किया है। It is disheartening to acknowledge that such an incident occurred within the petition of the reserved institution जो ऐसा जो इंस्टीट्यूशन है कि जिसमें सारी की सारी चीज़ें आइन और कानून के मुताबिक होती हैं, उस इंस्टीट्यूशन में अगर ये हाल है कि वहाँ किसी के हकूक़ सल्ब हो रहे हों, हाईलाइटिंग अ सीरियस लैप्स इन सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन फॉर लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड द जनरल पब्लिक इन लाइट ऑफ द डिस्ट्रेसिंग इवेंट, आई द ऑनरेबल चीफ जस्टिस एंड हिज फेलो जजेस टू take immediate and sustained action against the responsible for this blatant transgression. I earnestly request that the court conduct a thorough investigation into the matter, identifying and prosecuting these unknown persons for their illegal conduct, which facts can be conclusively ascertained through soliciting the CCTV footages। जो CCTV आपकी है सुप्रीम कोर्ट की, उसको भी देख के उन लोगों का अंदाज़ा या उसकी शनाख्त की जा सकती है। ऑफ द एंट्री एग्जिट पॉइंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग एंड द एंट्री एग्जिट रजिस्टर वेयर ऑल एंट्रीज आर रिकॉर्डेड। मोर एवर आई humbly implore the court to initiate criminal proceedings against the aforementioned individuals for their attempted abduction, confiscation of personal belongings and the explicit threat directed towards my counsel. This act of clerk counsel, this act intimation not only violated legal and constitutional rights but also engaged the safety and well-being of my appointed representatives. I trust in the reverse institution committed to upholding justice and action the safety of all individuals within its premises. I am confident that the Honorable Chief Justice and his fellow judges will take swift and decisive action to address this incident and prevent such occurrence in the future. I express my deep gratitude for your attention to this matter, your unwavering commitment to the principle of justice and security. Your faithfully Counsel of Imran Ahmad Khan Niazi, Sardar Shahbaz Ali Khan Khosa, Additional Secretary Supreme Court Bar Association, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है कि जनाब मेरा क्लर्क था जो इमरान खान की दरख्वास्त दायर करने गया था, उसको धमकाया गया, उसको अगवा करने की कोशिश की और उससे तमाम दस्तावेज़ात छीन ली गई। अगर आपके इहाते में ये हशर होना है तो फिर हम इंसाफ कहाँ लेने जाएंगे। उन्होंने ना सिर्फ चीफ जस्टिस से बल्कि तमाम साथी जजेस को ये ख़त लिखा है और कहा जी कि हमें इंसाफ दें, हमारे साथ क्यों ज़्यादती की गई है। आपके CCTV फुटेज कैमरे हैं, आप उसमें देखें वो कौन लोग थे नामालूम जो सुप्रीम कोर्ट में आप तो हमें लेवल प्लेइंग फील्ड रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान से देने की बात करते हैं। आपके अपनी सुप्रीम कोर्ट में अगर ये हाल है और वहाँ नामालूम लोग हमारे कागज़ और हमारी पिटिशन्स और दरख्वास्तें छीनने की कोशिश करते हैं, फिर तो इस मुल्क का निज़ाम चल गया। ये दरख्वास्त दायर की गई है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।